Hey everyone, welcome to my channel Juneflower. In today's video, I'm going to make 3 DIYs for home bar. This is DIY 1. I had this old wooden plank, so I am just writing bar on it with white acrylic color. As you can see, this is an old ventilation जिसे मैंने टील कलर कर दिया है. बहुत अच्छे से कलर नहीं किया है, just to give a distress look. मैं इसे आर्ट वर्क की तरह यूज़ करूँगी. You can use it as photo frame too. This artwork my kids have done. मैं सिर्फ राइटिंग पार्ट ही कर रही हूँ just to make these artwork more interesting. So our artwork and writing done और अब हम इन्हें फ्रेम में लगाएंगे. क्योंकि ये वुडन फ्रेम बहुत हेवी हैं इसलिए मैंने ये मेटल हुक्स लगवाए हैं. मैंने ये ग्लास पीसेस और कार्डबोर्ड भी फ्रेम के साइज़ में मार्केट से ही कटवा लिए थे. Now they are ready. Now this is our second DIY. I have taken plastic plate और उसे मैं light brown acrylic color से cover करूँगी. Now I am using black acrylic color for writing and I am using brush only. आप चाहें तो पोस्का मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं. Just to give wooden look, मैं brown acrylic color से lines draw कर रही हूँ. Here I'm writing my husband's name. You can write whatever you want to write. So this is our final look. मैंने तीनों DIYs को एक साथ लगा दिया है और हमारा bar corner is ready. There is this bottle lamp and I couldn't make it functional, but soon I will make a video on this too. So stay tuned. Thanks for watching my channel. If you like the video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel, Juneflower. You can follow me on Instagram too with @JuneFlowerArt.